आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे BTC के फ्यूचर प्राइस की और M2 कर्व की, जो कि एक बहुत इकोनॉमिक इंडिकेटर, इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है रिलेटेड टू द बिटकॉइन प्राइस वैल्यू एंड हाउ द बिटकॉइन इज़ गोइंग टू गेट चेंज्ड इन द कमिंग टाइम। एंड ऑल्सो आज हम बात करेंगे SEC यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रूल की, जिसकी वजह से बहुत से डिफरेंट क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस जो कि USA में ऑपरेट कर रहे थे, उनका अप स्टैंड्स क्या है एंड हाउ पॉजिटिव दे आर रिलेटेड टू इट. सो let's move towards the details of the video, but before we move ahead, it's a request to watch the video till the end, subscribe, like and leave a comment. So let's move ahead. तो आज बात करते हैं BTC कर्व की और M2 कर्व की. तो बेसिकली बात ये है कि M2 इज़ द मनी सप्लाई. अब व्हाट इज़ मनी सप्लाई? सो मनी सप्लाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ मनी इन अ सिस्टम, यानी कितनी मनी किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी ग्लोबल सिस्टम में मौजूद है, प्रेजेंट है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मनी सप्लाई, इट टॉक्स अबाउट ऑल द मनी दैट्स प्रेजेंट इन बैंक्स, दैट्स प्रेजेंट इन फंड्स, दैट्स प्रेजेंट इन विद द कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एज वेल एज people or the common people. अब उनके बैंक डिपॉजिट्स, उनके पास कैश सप्लाई जितनी भी है, दैट इज़ द ओवरऑल M2. सो व्हेन वी टॉक अबाउट M2, इसका BTC से क्या कॉन्ट्रास्ट है? सो आज इस वीडियो में यही बात कर रहे हैं कि BTC जो है, its price, it's actually tends to rise whenever the M2 tends to rise. So जिस तरह M2 यानी मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, the amount of that money supply tends to go into the BTC, यानी लोग उतनी ही उस M2 सप्लाई से BTC they're gonna buy it. So if M2 goes up, the BTC price or BTC curve goes up, the BTC price goes up. So अब situation could change है. Why so? Because we have the following reasons which you can actually see on the screen. In the past, the BTC just tended to rise, but right now, if you see the white line, which is actually the global M2 supply, that was actually increasing by a certain time period, but later in the start of 2025, it has started to tank down, यानी ये decrease होती गई. And with the same number, you can see the Bitcoin price or the one in green, the green line, that has also started to decrease, because जिस तरह money supply increase होगी, Bitcoin price भी increase होती है. And if money supply goes down, the Bitcoin price starts to fall. So it has a very direct proportion or directly proportional to the presence of money and the price of the Bitcoin. अब बात करते हैं how we can bring Bitcoin back to 100K. Well, the remedy is not so good and not so bad. It somewhere lies down in the gray zone of 50-50. So how it's going to really work? See, whenever the government see that there is lesser money in an economy, what they will do is they print more money so that people can buy more of it. But इसके कुछ drawbacks हैं, और वो drawbacks कुछ ये हैं कि if an economy has more and more money, it tends to get more and more inflation, because तुम जितनी सप्लाई ऑफ मनी एक इकोनॉमी में डाल देते हो, people tend to have a lot to spend, and when people tend to have a lot to spend, the price or the price of goods, commodities, daily stuff और groceries जो कि तुम डेली के टाइम पे बाय करते हो, it tends to increase, यानी more and more people are willing to spend money on a particular commodity or a particular good, which results in people who do not have that much money to basically afford those commodities, resulting in consumer price index going higher. Now, the government can tackle it, but if they are really that much interested in Bitcoin, unless or until Bitcoin supply को increase करने के लिए और Bitcoin price को increase करने के लिए, they tend to have or inject more liquidity. Liquidity means more presence of cash and money in the system. So government usually money print करके system में inject कर देती है, system में डाल देती है, which results in interest cut rates. And how that really happens? Well, this happens when the government tends to cut the interest, यानी गवर्नमेंट बैंक्स को एडवाइस करती है कि वी आर गोइंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, रिजल्टिंग इन मोर पीपल कमिंग टू बैंक्स आस्किंग फॉर लोन्स सो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, रिजल्टिंग इन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड मोर बिजनेसेस एक्सपैंडिंग. बट उसके ड्रॉबैक्स ये हैं, अगेन इन्फ्लेशन, मोर मनी, डिवैल्यूएशन ऑफ डॉलर एंड करेंसी. और इसके साथ एक और प्रॉब्लम राइज हो जाती है, जो कि सब इकोनॉमी, सब कंट्रीज़ में होती है. वो इस तरह कि इफ़ द डॉलर गेट्स डिवैल्यूड, द ट्रेड गेट्स ईजियर, बट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इट टेंड्स टू राइज अगेन. सो इसके रिज़ल्ट में एक और फैक्टर, एक और हिस्टोरिकल फैक्ट वो ये है कि रिसेंटली इन 2019, अराउंड 6 years ago, 2019 में US गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में, उस ड्यूरेशन में
उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंटर स्टेट यानी इंटर गवर्नमेंट कुछ लोन्स लिए थे from other governments. And when the US will see that they do not have much money to basically pay those loans back, they're going to print more money and they're going to inject back to the economy, basically giving back those loans. But again, iska result kya hai? Although we'll have more money to buy BTC, have more reserves for us, but in the future the inflation, or you can say the other things are going to get down, so that is going to give a very bad result. Ab baat kare, if you see the result on the screen, which tells you that from 1990 till 2020 the US government has taken so much loans, and to tackle these loans, of course, they're going to print more money. So we might see the BTC price going up probably in the next 1 to 2 years, but for the economy it's going to be very bad. Okay, अब बात करते हैं SAB 121 accounting rule की. Now what is SAB 121 accounting rule? SAB 121 accounting rule is a rule for the companies जो कि USA में crypto funds यानी अपने clients से crypto funds को manage कर रही थी. They were required to release, or they were required to declare their assets on their balance sheets, yani in their assets and liabilities section, which was a little problematic for them, because the moment any bank, any institution, financial institution, investment company, they place or they have those kind of records for their clients, even managing them makes them accountable to pay more taxes. So with the current government or the President Donald Trump's regime, this SAB 121 rule is going to be completely changed, or there we can really see some modifications happening. So that is a good news for many crypto funds or crypto management fund companies and crypto startups. But this is going to be a little hypothetical situation to really see where the crypto fund managers or crypto companies might see themselves. But एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि in the coming time we are going to see some crypto ball, which actually is a crypto gathering, a crypto ceremony of all the crypto founders in the USA. आपके सामने screen पर the invitation is out there, and it is held by Donald Trump, and all the big founders of crypto firms are going to be a part of it. So that is it for today's video. If you like it, do not forget to give a like, subscribe and share. I hope you'll have a good day. Goodbye.